Good morning. After some breaks, again I am here with the next part of the continuity and differentiability. Continuity and differentiability. Since we are in the next continuity we are going to discuss, we have also discussed some differentiation, implicit up to implicit function, and after that we have to discussion about ex as well as log x to the base e. First of all, we just know about these two functions. You have learnt about it in class 11. It is in appendix. This is called exponential function, and this is logarithmic function. But as you know, what is the relation between exponential and logarithm? It is very simple. If you say that 2 to the power 3 equal to 8, this is in exponential form. You can write it log of 8 to the base is 2 is equal to 3. 2 to the power 3 must be equal to 8. So this is base in logarithmic as well as in exponential both. So 2 to the power 3 is equal to 8. We can say that log of 8 to the base 2 is equal to 3. If you say 3 to the power 4 is 81, simply you have to say that log of 81 to the base 3 is equal to 4. So this is the relation between exponential and logarithmic. Now here, if you say that there is a function fx is equal to x to the power n, let it denoted by fn, and there is another function fx as some values to power x, let it be, I can say that 2 to the power x or 10 to the power x or 5 to the power x, whatever. So if you think that we are discussing about that x to the power fx as x to the power 10, fx as x to the power 10, so it is denoted as f10, and fx as x to the power 15, it is denoted as f15. Now what is the difference between x to the power 15 and 15 to the power x, or x to the power 10 or 10 to the power x? Both are exponential. This is also. So if you draw all these graphs, you can see in your NCERT book there is a graph of, I think in page number, you can say it is page number 170, NCERT first part. We will see the different graphs of x to the power something and some constant to the power x. You can find it. So let us we discuss about it. Here you can see the graph. This is the graph. Here y to the power x, y equal to x, y equal to x square, y equal to x cube, y equal to x to the power 4, and the last जो कि y एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक है, y equal to 10 to the power x. What you see, the first four graphs like y is equal to x, y equal to x square, y equal to x cube, y equal to x4, all this graph must pass through 1 1, while 10 to the power x, whether it is 2 to the power x, 5 to the power x, 3 to the power x, it must pass through 0 1. You can find it. Now as the power of x increases in this one fn, as I said, fn x at x to the power n, as xn increases, n is here positive integer, you will find the sharpness of the growth of the graph is just closer to y axis, but it never meet y axis. Mind it, जैसे जैसे इसकी पावर छोटी थी तो दूर था y से, नज़दीक होता गया, फिर नज़दीक होता गया, लेकिन किसी भी केस में ये y एक्सिस को कट नहीं करेगा. If you think that the curve intersect y axis, certainly
at that very point x must be equal to 0. So base is not going to be 0. So the curve, the graph of this function cannot intersect at any point on y-axis. 0, 1. As you put x is equal to 0, we will get y is equal to 1. So the point is 1. Y equal to 2 to the power x equal to 0, y equal to 1. So the curve y is equal to 10 to the power x is called, actually this function 10 to the base, if base is 10, then this exponential function has a special name, natural exponential function. Is it 10 to the power x, sorry, common exponential function, but when it becomes e to the power x, it becomes natural exponential function. Okay, so you have studied about in exponential function as well, that exponential is what? Exponential is e is 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3. It is an infinite series. This is exponential e, or if you write down x, it is 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2, x cube by factorial 3, and so on. And you have also studied about ex minus 1 is transpose, and then taking x as common, we will get 1 by factorial 1 plus x by factorial 2 plus x square by factorial 3, and etc. This one. And if you take x tends to 0, that is limit x tends to 0, you will find all these terms are 0 except 1. So the exponential is 1. Limit of this function becomes 1. This is in appendix. You have to study about the supplement of the calculus part. Okay, so as I said, when it is this one, it is called common exponential function, but if the base becomes xe, it is called a natural exponential function. Natural exponential function. Okay, you know the value of e ranges between 2 to 3. It is an irrational number, you all know. If you are not going to know, you please consult the book. Now according to all these three, what you find that here e is a positive number, x may be positive, maybe 0, or maybe negative, whatever. The value of e to the power x is a real number, and real number in what sense? If e is in between 2 and 3, then can you find any negative number? You are not going to find any negative number. You are not going to find any 0 number. Do you? No. So that's why when we convert it into logarithm, log of x to the base e, we find some numbers. Let it be y, let it be some, or you can say here log of a to the base e as x. We say e to the power x is equal to a. As I said, e is in between 2 and 3. So whatever the value of x may be, either we have negative number. So positive to the power negative, what does it mean? It is also positive. It is not going to be negative number. So a is positive. If x becomes 0, e to the power 0 becomes 1. So 1. If x is greater than 0, that means positive. Again, since it is 2 and value of the e is between 2 and 3, certainly increases the value of x, you will get the value increases. So that's why you find the curve of exponential is like this one. Here is the point 0, 1, and as x decrease negative, means going to negative, you will find the value of e to the power x come closer to x-axis but never meet x-axis. It makes y-axis at 0, 1, and then as x increases, it's go just far away from the y-axis. This is y-axis. Clear? This is the graph of exponential, natural exponential function, e to the power x. You can find the graph of 2 to the power x, 10 to the power x, 5 to the power x as well. You can, and you should find it. But here our motto is not to draw the graph of the function, but
we are going to discuss about some more like going to logarithmic function. So what is the definition of natural exponential? यहाँ करें let b be any positive number, and rather you can say let b is greater than 1, be a real number, be a real number. Then logarithm of a, any value a, to the base b, to the base b, b greater than 1, is x if b to the base b है तो exponential में b to the power x becomes a. So we have taken b as positive, base is positive. If we are going to write down log to the base b some number, so since b is a positive or equal to some number, whether it is any real values, it may be less than 0, equal to 0 or greater than 0, whatever. If b is greater than 1, certainly if a is less than 1, it is going to be power, less than 0, negative. So suppose we are going to take 2 and a as minus 3. So 2 to the power minus 3 is what? 1 by 2 to the power 3, that is 1 by 8. So the value is again is positive. In no case the b to the power something becomes 0. In no case b to the power a becomes negative, as we have taken b is greater than 1. So logarithm of a negative number and 0 is not defined. Whoever defined logarithm, to ambiguity becomes in negative marks, as you say negative to the power even number is positive, negative to the power negative number odd number is negative. So there are so many negative. पॉजिटिव नंबर में क्या है, पॉजिटिव नंबर में चाहे पावर इवन हो ऑड हो पॉजिटिव ही मिलेगा. निगेटिव में ये चीज़ नहीं है. निगेटिव में पॉजिटिव होने पे इवन होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड होने पे निगेटिव हो जाएगा. सो लॉगरिथम निगेटिव और ज़ीरो का डिफाइन नहीं किया गया. सो हेयर मस्ट बी b इज़ ग्रेटर देन 1. और इन एडवांस स्टडी यू कैन फाइंड ऑल्सो दैट b may be between 0 to 1, but here we are discussing about, so logarithm function is defined as from r positive. Here r positive means greater than 0. R positive means this interval to r. Range is any, जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. सो बट उसका डोमेन क्या है, r पॉजिटिव है. उसका डोमेन क्या है, r पॉजिटिव है. What about एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल में आप लॉगरिथम में हमने ये कह दिया कि लॉगरिथम का जो फंक्शन है वो फ्रॉम r पॉजिटिव टू r है. हाउ कैन यू डिफाइंड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? इसका क्या होगा, x, इसमें तो x का पावर कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर हमने कहा कि b टू द पावर x एज a, इस केस में एक्सपोनेंशियल है तो x क्या होगा, x को तो हम यहाँ निगेटिव भी लेंगे. x को हम यहाँ देखिए लॉगरिथम में क्या था, लॉगरिथम में वैल्यू and it is denoted as log of a to the base b is equal to x. So ये इसके रेंज में आ रहा है ना. ये क्या आ रहा है इसके, तो log हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, यहाँ क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रियल नंबर को लिया है. तो ये बट एक्सपोनेंशियल में x तो कोई भी रियल नंबर है और वैल्यू उसकी हमेशा r2. तो एक्सपोनेंशियल बिकम्स फ्रॉम r to r पॉजिटिव, फ्रॉम r to r positive. Is it or is it not? You just find it. You will find it that exponential and logarithm are actually, if you draw the graph of e to the power x as b to the power x is equal to a, or log of b to the power to the base b, log of a to the base b as x, इनका अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं. अगर हमने ex का ग्राफ ड्रा करना है और log of x to the base e, इन दोनों का ग्राफ अगर ड्रा करेंगे तो you will find that the graph of these two are the mirror image towards the line segment y is equal to x. जैसे e to the power x का अगर ग्राफ ऐसे जाएगा तो लॉगरिथमिक का ग्राफ जो है ठीक इसका मिरर इमेज के तौर पे इस तरह आएगा, है ना. यहाँ पर आएगा 1 0
और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में 0 1 इज़ कॉमन, लॉगरिथम में 1 0 इज़ कॉमन पॉइंट, लॉगरिथम में 1 0 इज़ द कॉमन पॉइंट. You can simply find logarithm to the base 2, logarithm to log of base e, log of base 10 as usual. Also जो टेबल हम लोग देखते हैं किसी का, वो बेस 10 का होता है, वो बेस 10 का होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम. और जो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम या डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में जो लॉग पढ़ेंगे वो बेस ई का होगा, उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम. क्या कहते हैं उसको हमें? नेचुरल लॉगरिथम. और यू विल फाइंड दैट समवेयर इट इज रिटन एज ln. ln मीन्स log ऑफ सम टू द बेस e. मान लो ln साइन लिखा हुआ है, साइन x, दैट मीन्स log ऑफ साइन x टू द बेस e. ln x लिखा हुआ है, दैट मीन्स log ऑफ x टू द बेस e, not 10. So ln is nothing but natural logarithm. Now before proceeding, some problem based or some concept based on differentiability, where we find some property of logarithm. Initially it was in class 9 syllabus long before ago, that if you define that log, हम एक बेस लेते हैं log of m to the base a as let it be x, and log of n to the base a is y. Okay, so these are in logarithmic, we can convert into a to the power x is equal to m and a to the power y is equal to n. Now just I try to multiply these two, we get mn. So bases are same, we can write down, mind it, a must be greater than 1, a to the power x plus y is equal to mn. Now convert into logarithm. This is what in, this is in exponential form. I am going to convert to log of mn to the base a must be x plus y. So what you find that log of mn to the base a is, x is taken as log of m to the base a and y is log of n to the base e. So this is a property. So प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का लॉगरिथम जो है उन नंबर्स के लॉग के सम के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? सम के बराबर. एंड द सेम वे, in the same way, if you can find the log of m by n, you will find that there is a minus term. There is a minus term. So how can you do it? Just you try to find as division. You just take a to the power x by a to the power y. What do you find? That m by n. By laws of exponents, you find that x to the power x minus y is nothing but mn. Now this is exponential, convert into logarithm. Log of mn, base is a, is x minus y. What is x? Log of m to the base n. Minus, what is y? Log of n to the base n. So log of m by n is log of m minus log of n. Bases are same, a. So this is same, product and division. Product and division. One more thing, if we take log, suppose it is given that x equal to 10, you can take logarithm both side, x, log x is equal to log 10, whatever the base may be. If it is in product, that log of x plus y, you never write down log of x plus log of y. Is it that? ये प्रोडक्ट होगा तब प्लस में होगा, प्लस में लॉग नहीं होता, प्लस में लॉग नहीं होता. क्लियर? So now and the next part is that log of some number, m to the power n as base a, it is as n into log of m to the base n. Very simple. You can again take log of m as we have taken, this is as x. So now write down a to the power x as m. Okay, a to the power x as m. Now दोनों तरफ आप पावर चढ़ा दो, किसका? n का. तो ये हो गया. Can I write by laws of exponent
a to the power nx, ये दोनों पावर इंटू हो जाते हैं, इज इक्वल टू m to the power n. Now this is in exponential form. Convert into logarithmic, you will find log of m to the power n to the base a is nothing but nx. और nx क्या है भाई? तो log of m to the base a. सो पावर में हुआ तो क्या हुआ? पावर, ये जो पावर होता है वो इधर चला आता है. अगेन m शुड बी पॉजिटिव. Okay, so this is what we have done in this part. In the next part, you can change the base. Log of a, if it is b, you can write down 1 by log of b to the power base a. You can change it. How? Let it be m. Let it be m. Okay. m हो गया. क्या करेंगे हम लोग? लॉग जो इसको माना हमने, तो ये हो गया b का पावर m इक्वल टू a. इसको हमने मान लिया m. अब इफ यू टेक mth रूट, यू कैन फाइंड a b इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई m. दैट मीन्स दिस वन इज. नाउ अगेन कन्वर्ट इट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो क्या पाओगे आप? लॉग ऑफ b टू द बेस a इज 1 बाई m. 1 बाई m. सो क्या देखा हमने? log of b to the base a is 1 by m. m is what? Log of a to the power to the base b. So just we have converted it. इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, you will get the result. So change करना हो, मतलब आप इससे ये भी कह सकते हो log of b to the base a into log of a to the base b is nothing but 1. Now if you are going to, जैसे मिला डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x टू द बेस e, हम लोग कहते हैं इट इज़ 1 बाई एक्स. ओके, व्हाट अबाउट इफ log ऑफ x टू द बेस 2? व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस वन? log ऑफ x टू द बेस 2, इसका तो कोई हम लोग जानते नहीं. हम लोग ddx, इसका स्टैंडर्ड क्या है? ddx log ऑफ x टू द बेस e, दैट इज 1 बाई एक्स. सो व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस वन? सो चेंज दिस कैन बी डन. यू जस्ट राइट log x log 2 एंड जो बेस चाहिए वो यहाँ लिख दीजिए. ये इसका चेंज होगा. कैसे? यू कैन फाइंड इट. हाउ कैन यू चेंज द बेस? सपोज देयर इज अ logarithmic function log of b to the base e, and you have to convert into the base e. Okay, you have to convert it into the base e. तो what we have to do first of all, कि अगर हमें इसको जाना है तो ये आएगा एक्चुअली e इसके बराबर. Now let us take log of b to the base e as x, log of a to the base e as y. तो यहाँ से e to the power x is b, यहाँ से e to the power is a. Okay, this is what we have. Now, so what is e? इस केस में e को क्या कहोगे आप? इस केस में e को कहोगे b का पावर 1 बाई एक्स. इज इट और नॉट? कहोगे या नहीं कहोगे? और फिर इस e की वैल्यू इसमें डाल दो. b का पावर 1 बाई एक्स, y इज a. सो व्हाट यू फाइंड दैट e b टू द पावर y बाई एक्स इज a. b टू द दिस वन, और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे. चूंकि हमें ये प्रूव करना है, तो यू कैन से दैट b इज नथिंग बट a टू द पावर x बाई y. और फिर जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में बदलोगे तो log of b to the base a is x by y, or x is what? X is this one and y is this one. You can prove it. Very simple. Is it or not? So these are some fundamental concepts in order to find the differentiation of different part. Okay? Here one more question. Is it true that x is equal to log of e to the power log x? Do you think that x must be e to the power log x is always x? For that, we just let y is equal to e to the power log x and take log both side. अच्छा, log तो बेटा तभी लगेगा, log तो तभी लगेगा जब y पॉजिटिव होगा. So y must be positive. So log of y is log of e log x. Log m to the power n, mind it here, base is e. Base is, this is natural logarithm. So log of y is nothing but log x, ये जो पावर है वो इधर आ गया, of log e. Since base is a e,
So this value becomes 1. So what is log of y is log of x. As we have taken y is equal to सम पॉजिटिव जिस पे लॉग डिफाइन है, लॉग किस पे डिफाइन होगा, डिफिनेशन था b मस्ट बी ग्रेटर देन 1, सो y मस्ट बी ग्रेटर देन 1. एक्चुअली किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है, नॉट एक्चुअली वो बेस था, हाँ किसी भी y इज ग्रेटर देन 0, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x, और किसी के लिए नहीं. यहाँ -5 तो रहेगा, डिफाइन ही नहीं रहेगा. तो सबसे बड़ी बात, जिस पे लॉग डिफाइन है उसी के लिए ये ट्रू होगा, बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये ट्रू नहीं होगा. क्लियर है. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग जानते हैं, क्लास 11 में e⁻x होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ log x हम लोग जानते ही हैं, वो क्या होता है, 1/x होता है, एंड सो ऑन. बेस्ड ऑन दिस वन वी कैन have the solution of 5.4. I think we have done exercise 5.3 earlier I think on the 30th last day of the online classes. We have done some questions of 5.3. In 5.4 is nothing but have some question based on chain rule or logarithmic case, etc. I am going to take 2 or 3 questions. That question is, find the derivative, determine the following, differentiate the following with respect to x, e⁻x by sin x, e⁻x by sin x. डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ddx निकालना है. एज यू नो दिस इज कोसेंट फार्मूला. सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, लीव द डिनोमिनेटर एंड डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर, एंड देन माइनस numerator छोड़ा ddx of sin x. So what is the differentiation of ex? It is nothing but ex. ex sin x का क्या होता है, cos x, and divided by sin square x. You can simply take common ex, sin x minus cos x and whole divided by sin square x. cosec x इसको आप कर सकते हो, cosec x minus cot x कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ. इसी तरह आपसे और भी क्वेश्चंस होगा, जैसे एक है e⁻x प्लस e⁻x² प्लस डॉट डॉट e⁻x, जो भी है 5 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You are required to find ddx of e⁻x plus e⁻x² plus dot 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 plus e⁻x5. Okay, this is the combination of chain rule, and we are going to find that ddx of ex plus dx of ex² plus dot 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 ddx of ex5. So e⁻x is what, ex. e⁻x इसको हम x समझते हैं, तो ex². बट सिंस x² इज नथिंग बट x नहीं है वो, तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, ddx of x² and that e⁻x5 and again ddx of x⁵. So what you get, ex, x² का ddx 2x ex² dot dot x⁵, 5x⁴ ex⁵, and this is the differentiation. तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था. ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं, बाकी किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछे जाने चाहिए. क्या हो अगर फंक्शन का पावर फंक्शन में आ जाए, या कुछ लंबे से प्रोडक्ट में हो. अभी तक हम लोगों ने xn x⁻n का किया डिफ्रेंशिएशन. क्या किया, अगर fx x⁻n था तो व्हाट इज f'(x), यानी व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x? इट इज नथिंग बट n इंटू x⁻n-1. व्हाट इफ fx इज x⁻x? अब गलती से भी ये मत कर देना कि जैसे उसमें है कि x इंटू x⁻x-1. दिस इज रॉन्ग. सो व्हाट
what we are going to find, this is a function of some function. Yani if you are given that there is a function fx which is equal to a function x and raised to the power some another function, then use of logarithm is essential here in our scope of the learning, our studies. What we have to do, we have to take both side logarithm. We have to take both side logarithm. As you can say, I'm just giving one example. Suppose it is given that y equal to x to the power x, जो सा अभी हमने कहा, तो क्या करेंगे हम लोग, take logarithm both side. Log of y is log of x to the power x. Mind it, this is natural log, so we are not mentioning here base e. So log of y is, power है तो ये power इधर आ गया, x into log x. Now differentiate with respect to x. What is the differentiation of log x? It is 1 by x. So log y is 1 by y. But it is not y, it is not x. So chain rule के हिसाब से dy by dx. Now here is product rule. Here is, actually we have to write down, इसके बाद लिखना था कि ddx of log y is equal to ddx of x log x. So here x को छोड़ा, ddx of log x, then log x को छोड़ा, ddx of x. Clear? So this is what. Now the next thing on the left hand side, what we are going to do, that 1 by y divided by dx, 1 by y divided by dx is x, ddx of log x, ddx of log x is 1 by x, so x into 1 by x plus log x, और ddx of x is 1. इस y को ट्रांसपोज कर दो आप, तो what is divided by dx, y कैंसिल होकर 1 हो गया, log x, और y क्या था हमारा, x to the power x 1 plus log x. तो ये हुआ x to the power x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x to the power x into 1 plus log x, नेचुरल log x, 1 plus नेचुरल log x. क्लियर है? अब सपोज यही फंक्शन जो है आपको दो तरीके से दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए. क्या दिया आपको डिफरेंशिएट करने के लिए? ये दे दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए कई फंक्शन दे दिए उसमें. You have to differentiate find the differentiation of, you can say differentiate the function with respect to anything, let it be जैसे दिया है एक क्वेश्चन है log x and plus x का पावर log x, let it be y. इसका ddx निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब ddx निकालना है, मतलब हमें डिवाइड बाय, अगर इसको हमने y मान लिया तो हमें डिवाइड बाय dx निकालना है. अब क्या है, जैसा भी हमने बताया आपको कि फंक्शन का पावर फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमें लॉग लगाना चाहिए. यहाँ पर गलती हम लोग कर जाते हैं बच्चे, डायरेक्ट लॉग लगा देते हैं. लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ log x टू द बेस है, ये पूरा नहीं, दैट इज रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u क्या है, u है log of x to the power x, v क्या है, x to the power log x. Okay, so in order to find dy by dx, you are required to find du by dx as well as dv by dx. ये हमें निकालना है. So if you are going to find dy by dx, you have to find du by dx as well as dv by dx, and u is here. Now यहाँ पर हम log लगा सकते हैं, v is here, यहाँ भी हम log लगा सकते हैं. तो from here we are, as in this case we have found dy by dx, in this case we can find du by dx as well as dv by dx. How? You will get the next part, just in the next part of the solution. तो यहाँ हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ से du by dx निकालना है, तो log लेंगे दोनों तरफ. log u, here it becomes, जब हमने log लिया तो ये पावर इधर आ जाना है, पहले लिख लो log of log x to the power x, ठीक है ना.
So this x and log of log x, log of log x. And now differentiate with respect to x. So log u का 1 by u and then du by dx. And now here is product rule, x into this one. So क्या किया, x को छोड़ा, ddx of log x किया, फिर log x को छोड़ा, ddx of x किया. So du by dx is what? इस u को ट्रांसपोज किया हमने इधर, x log किसी का, log x का क्या होता है 1 by x, तो log of log x क्या हो जाएगा 1 by log x. बट log x x नहीं है तो इसका फिर चेन रूल की तरफ ddx of log x. समझ रहे हैं बात को, यहाँ चेन रूल लग रहा है. फिर log of log x एंड x का डिफरेंशिएशन 1. क्लियर? सो u मीन्स log x to the power x. हियर x आ जाना है, x ऊपर 1 by log x का 1 by x प्लस log of log x. ये x और x कैंसिल. So what do you find? du by dx as log x to the power x is equal into 1 by log x plus log of log x. This is du by dx. आपको पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy by dx. और वो क्या है निकला था, पीछे जाएंगे तो du by dx प्लस dv by dx. तो हमने du by dx निकाल लिया. अब बचाइए, in the same process just we are here going to take log v equal to log of x to the power log x. That means ये पावर इधर आ जाएगा, log x of log x. वाह, ये प्रोडक्ट हो गया किसके बराबर, log v के बराबर. कैन आई रब शुड बी. अब जो हमने यहाँ तो मिटा दिया, आप उसको ध्यान रखना कि हमने क्या निकाला था, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, log v log x. अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ddx of log v is equal to ddx of log x का होल स्क्वायर, log x का. So what is it, 1 by v and dv by dx. This is 2 log x and log x is other than x, so ddx of log x. So it is 2 log x into 1 by x, और ये v इधर से ट्रांसपोज होके आ गया dv by dx. So dv by dx is what, v is what, x to the power log x into 2 log x by x. Am I clear or not clear? ये आपका dv by dx, उधर क्या था du by dx, log x to the power x bracketed 1 by log x plus something. So put this value and that value here, dy by dx is equal to du by dx की जो वैल्यू थी वो and plus dv by dx की जो वैल्यू है वो लिखे. That is your answer. Am I clear? This is exercise 5.4 and 5.4 नहीं, rather we have gone in exercise 5.5 and in this very, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने log लिया. log और कहाँ ले सकते हैं, log केवल फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तभी नहीं लेंगे. समटाइम्स इफ इट इज ए larger multiplication like x plus 1, x plus 2, x plus 3, 2x minus 3, 4x minus 5 and so on, and you have to differentiate it. Then you can simply take log y as it is product. It can be written in log x plus 1, log x plus 2, log x plus 3, log 2x minus 3 plus log 4x minus 5 and then differentiate. Differentiating you will find, अगर आप differentiate करते हो आप 1 by y divided by dx इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. log x का 1 by x होता है, it is 1 plus x, 1 by x plus 1. and what is the ddx of x plus 1? you should write here first समझने के लिए. log x plus 2 का differentiation 1 by x plus 2 ddx of x plus 2. log x plus 3 का डिफ्रेंशिएशन
1 by x plus 3 and then ddx of x plus 3. log 2x minus 3 का 1 by 2x minus 3 ddx of 2x minus 3. log 4x minus 5 का ddx 1 by 4x minus 5 and then ddx of 4x minus 5. What do we get? 1 by x plus 1. Okay, x plus 1 का ddx, x का 1, 1 का 0, so nothing, 1 ही रहेगा. ये भी 1 by x plus 2, x plus 2 का 1, ये भी 1 by x plus 3, बट हियर 2x minus 3 का ddx 2 हो जाएगा, सो ये आ गया 2 by 2x minus 3. 4x minus 5 का ddx 4 हो जाएगा, तो ऊपर में 4 by 4x minus 5. और इसके तरफ हम इस y को ट्रांसपोज करके यहाँ लिख देंगे, सो दिस इज आवर dy by dx. एंड y की वैल्यू क्या था? ये पूरा, तो इस पूरे को फिर यहाँ लिख देंगे. दिस इज योर डिफ्रेंशिएशन. इज इट? समटाइम्स इट इज गिवन दैट like, and this is all in exercise 5.5. जैसे ये दिया रहा x minus 1, x minus 2, x plus 3, x plus 4. इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे log y, दोनों तरफ log लेंगे. तो log, और एक्चुअली इसको क्या लिखो आप, होल पावर हाफ. पावर है तो पहले इधर आ गया. अब इसमें जितने प्रोडक्ट ऊपर में है वो सब पॉजिटिव में जाएंगे. log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, और जितने नीचे वाले हैं वो सब निगेटिव में जाएंगे. क्वोशेंट में माइनस होता है log ऑफ x प्लस 3 माइनस log ऑफ x प्लस 4. ये हमारा हो गया एक्सपेंशन. अब हम लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डिफ्रेंशिएशन ऑन डिफ्रेंशिएशन अगर हम जाएंगे तो 1 by y डिवाइड बाई dx. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. 1 by 2 कांस्टेंट बाहर. log ऑफ x माइनस 1 का 1 by x minus 1 and ddx of x minus 1 is what? 1. So write down this one. 1 by x minus 2, ddx of x minus 2 is what? 1. Minus 1 by x plus 3. What is the ddx of x plus 3? x का 1, 5 का 0, so 1. 1 by x plus 4. ddx of x plus 4 is 1 again. So this is 1 by 2. अब इस y को ट्रांसपोज कर दो तो dy by dx हो जाएगा. y ट्रांसपोज हुआ तो आप पूरा इसको ऐसे लिख दो, x minus 1, x minus 2, x plus 3, x plus 4, और एक हाफ पहले से था, बाहर में यहाँ हाफ लिख दो, और ये ब्रैकेट में इस पूरे को आप उतार दो, कॉपी डाउन कर लो. उसके बाद एलसीएम उलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर वही जो हो गया वो आंसर हो गया. सो दिस इज व्हाट. देयर आर few more questions in this exercise, so we have to do in the next part of the video. Then we have to go for derivative of function in parametric form. Means y is a function of some another variable, let y is a function of t and x is also a function of t, and we are required to find dy by dx. Suppose y is a to the power t, and x is also given to be t. Y is a function of t, x is a function of t, you are required to find dy by dx. So how can, this is called parametric function. Suppose y is given as sin theta, x is given as cos theta, then what is dy by dx? So here parameter is theta, so this is called parametric function, and it is very important one. So in the next topic we are after completing exercise 5.5 we are going to do differentiation of function in parametric form. Okay, and then second order derivative, मतलब here we have done only the differentiation in first order. एक बार केवल हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, बाकी बार डिफ्रेंशिएट नहीं किया है. तो अगर मान लो सपोज y का पावर x हो, उसको हम कहें कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने में हमें dy by dx इक्वल टू 1 हुआ. अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार और करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.